गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2021। तो आपको पता है कि गूगल स्ट्रीट व्यू जो है वो इंडिया में कुछ सिटीज़ में लॉन्च हुआ है, तो इसलिए ये पॉलिसी हमारे जो है टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है। तो ये आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉलिसी के बारे में देखते हैं हम, जो लास्ट ईयर आई थी। तो ये पॉलिसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाली थी, और इसमें स्टेट और सेंट्रल पार्टनरिंग एजेंसीज के साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर जो जियो स्पेशल डेटा है वो पब्लिक डोमेन में जो है वो लोगों को एक्सेस करने के लिए लेकर आया है, ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या जो जियो स्पेशल सेक्टर में जो है स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो इसका जो है इसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकें। तो इसके पॉलिसी के कुछ हम फीचर्स देखते हैं। तो इसमें जो नेशनल स्पेशल डेटा कमेटी की पहले एग्जिस्टिंग जो आपकी बॉडी थी उसको जो रिप्लेस कर दिया गया जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी के साथ। इसका काम क्या होगा कि ये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हाई रेजोल्यूशन नेशनल डेटा टोपोग्राफिक डेटाबेस बनाए और लीड एजेंसीज के थ्रू जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर होंगी इस NGP को इम्प्लीमेंट करें। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज कलेक्ट करेंगी लीड एजेंसीज, और ये सारा जो है डेटा कंपाइल करके नेशनल फाउंडेशन जियो स्पेशल डेटा असेट बनाएंगी, और नेशनल थीमेटिक जियो स्पेशल डेटा असेट जो है उसके थ्रू जो है ये लीड एजेंसीज आगे सर्वे ऑफ इंडिया को और जो है इस मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमेटी को जो है वो डेटा भेजेंगी। तो इसमें स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों जो है वो एजेंसीज डेटा नोट्स जो है वो आगे प्रोवाइड करने वाली हैं, ताकि एक जियो प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जा सके जिस पे जो हमारे कंट्री का जो डेटा होगा जियो स्पेशल डेटा उसको इकट्ठा कर एक पार्टनरिंग एजेंसी के साथ उसको लॉन्च किया जा सके। तो ऑफ कोर्स इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने ऐसे स्किल फ्रेमवर्क्स भी निकाले थे, ताकि जो है आपके यूथ को ट्रेन किया जा सके जियो स्पेशल सेक्टर स्किल्स के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा और माल न्यूट्रिशन। तो ये आपका सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है GS1 का। तो यूनियन जो आपके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन को 2% पर एनम से हर साल कम करना चाहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि लो बर्थ वेट जो है इंडिया में उसको हम 2% पर एनम कम करेंगे, और अनीमिया को हम 3% पर एनम जो है वो कम करने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने NFHS का डेटा भी बताया है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वेस्टेड चिल्ड्रन है, झारखंड में सबसे ज़्यादा अनीमिक विमेन है, जो कि जिसको हमने BMI के थ्रू जो है वो नापा है। तो हम कुछ की हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। तो हमारी कुछ हाइलाइट्स जो हैं NFHS की, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स जो हैं वो इंडिया में 79% जो लास्ट हमारे फोर्थ सर्वे के मुताबिक 79% से बढ़कर अब 89% हो चुके हैं। स्टंटिंग जो है वो भी कम हुई है, वेस्टिंग भी जो है वो कम हुई है, अंडरवेट प्रेवलेंस भी कम हुई है, और विमेन में जो BMI है वो बिलो नॉर्मल जो है वो भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ आपका डेटा जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये आपका टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को। अब ये आपको पता है ना 2002 में एक्ट आया था, और बार बार इसमें अमेंडमेंट जो है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू करती जाती है गवर्नमेंट, एज एंड व्हेन की जैसी सिचुएशन एमर्ज होती है, जैसे क्राइम बढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट उसके अंदर जो है मनी बिल के तौर पर जो है वो अमेंडमेंट्स लाकर PMLA के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स कर देती है। तो इसके लिए ही जो है कुछ पटिशनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि इसको मनी बिल में क्यों अमेंडमेंट की जाती है, और ये पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है PMLA, और इसका प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रिंजेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है, वो एक टेररिज्म के लेवल का ऑफेंस है। तो इसीलिए जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है उसको अपहेल्ड किया कोर्ट ने। उन्होंने बोला है कि PMLA जो है वो हम एक इंटरनेशनल कमिटमेंट थी हमारी गवर्नमेंट की, तो इसलिए उसको हम लेकर आए हैं इंडिया में। ED के पास जो पावर होती हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कि असेट को सीज करने की और अटैच करने की, उसको भी जो है वैलिड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि ये बिल्कुल पावर्स वैलिड है, और लगभग 1 लाख करोड़ के असेट्स जो है वो ED ऑलरेडी जो है वो अटैच कर चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ED को कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे आपकी FIR होती है वैसे ED की ECIR होती है, उसको अक्यूज को के साथ शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। अगर ED को लगता है कि उसको केस जो ECIR है उसको नहीं दिखाना है तो वो नहीं भी दिखा सकती है। फिर
सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, जिसके अंदर दो कंडीशंस दी गई थी कि कब बेल मिल सकती है, उस कंडीशंस को भी जो है अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन कंडीशंस को पहले सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से पार्लियामेंट बाय लॉ उन कंडीशंस को दोबारा लेके आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपहेल्ड किया है। अब उस कंडीशंस में को जो है उसमें क्या था कि कौन से केस, जब किसी को अगर किसी अक्यूज को बेल मिल रही है तो दो कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो बेल मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से बेल को रोकने के ये प्रोविजंस थे, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अब सेक्शन 24 ऑफ पीएमएलए ये कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि जज जब वो केस की सुनवाई कर रहा है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जो अक्यूज्ड है वो तब तक गिल्टी ही है जब तक वो अपने आप को गिल्ट नॉट गिल्टी प्रूव नहीं कर देता। जबकि हमारा नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि इनोसेंट अंटिल गिल्टी, ठीक है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन इसमें क्या होगा कि तब तक आप गिल्टी ही प्रूव करे जाओगे जब तक आप ये नहीं प्रूव कर देते कि आप इनोसेंट हो, है ना। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देख लेते हैं। तो आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए लेके आए हैं, इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी करते हैं हम। और इसको कौन इन्फोर्स करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो 1956 में इसको हमने बनाया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। शुरू में इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती थी ये, लेकिन 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर जो है वो डाल दिया गया। फेमा और सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस है पीएमएलए के जिनको ये इन्फोर्स करती है। याद रखो, सारे प्रोविजंस पीएमएलए के इन्फोर्स नहीं करती है। इनके पास पावर होती है अटैच करने की, सीज करने की एसेट्स, और अगर कोई पर्सन जो है फेमा की वायलेशन में पाया जाता है तो इसके अंदर टाइम टू टाइम हमने डिस्कस भी किया है कि आपके पीएमएलए में और फेमा में जो है अमेंडमेंट्स करती रहती है गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से ही इन ईडी के पावर बढ़ती रहती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएन पीस कीपिंग। तो ये आपका टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2 बीएसएफ पर्सोनल जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन का पार्ट थे हमारे इंडिया में से DR कॉन्गो में, वो अभी जो है अमंग 5 पीपल जो है वो किल हो गए बिकॉज ऑफ सम प्रोटेस्ट वहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं यूएन पीस कीपर्स। तो ये 1948 में बनाए गए, इनको हम ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि ये सिक्योरिटी देते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, पीस बिल्डिंग का काम करते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब इसको ऑथोराइज कौन करता है इनके मिशंस को? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इनका बजट कौन जो है वो देता है? जो जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में बजट जो है वो कंट्रीब्यूट करें। इवन इनको 1988 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। तो इंडिया का जो रोल है यूएन पीस कीपिंग, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि इंडिया आज तक जो है वो कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा पर्सोनल जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं यूएन पीस कीपिंग में। इस टाइम पर भी इंडिया 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। इंडिया सबसे पहली कंट्री था, 2007 में बना था, जिसने ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजी थी। और इंडिया के ही सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स जो है उन्होंने अपनी लाइफ गंवाई है एज जो है इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BM-SEAL-11। तो ये आपका GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टॉपिक हो सकता है और आपका GS3 का इकोनॉमी का भी टॉपिक हो सकता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारत पेट्रोलियम को जो है में $1,600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, लगभग 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव की है, ताकि BM-SEAL-11 ये एक आपका पेट्रोलियम प्रोजेक्ट है ब्राज़ील में। वहाँ पर जो है भारत पेट्रोलियम जो है वो ब्राज़ील की जो है पेट्रोबास जो वहाँ की कंपनी है उसके साथ मिलकर 40% शेयर के साथ जो है वहाँ पर ऑयल की प्रोडक्शन कर सके 2026 से 27 तक। उसके लिए कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया की जो है क्रूड ऑयल सप्लाई जो है वो डाइवर्सिफाई होगी, हमारी इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका फुटहोल्ड ब्राज़ील में बढ़ेगा और हमारे बायलैटरल टाइज भी अच्छे होंगे उससे, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। तो ये आपका GS2 गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। इस बिल के अंदर हमने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा बनाने की बात की गई है, ताकि एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को स्पोर्ट्स में रेगुलेट किया जा सके। तो ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़, ये सब जो है ये आपकी बॉडी करने वाली है नाडा। और हमारे जो है इस लेजिस्लेशन में कहा गया है कि एथलीट्स, उनका सपोर्ट स्टाफ या कोई भी पर्सोनल जो उनके साथ एंगेज है स्पोर्ट्स में, वो अगर जो है उनको जो है प्रोहिबिट करते हैं कि वो जो है डोपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस
लेजिस्लेशन के अंदर एंड अगर कोई एंटी डोपिंग रूल्स को वायलेट करता है तो उस एथलीट के मेडल्स को भी फोरफिट किया जा सकता है, पॉइंट्स या प्राइजेस को फोरफिट किया जा सकता है, उनको कुछ टाइम के लिए बैन किया जा सकता है और इवन उनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, है ना। तो अब जो है नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग हमने एक इन स्पोर्ट्स भी बना दिया है ताकि जो है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एंटी डोपिंग रेगुलेशंस और कंप्लायंस के जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है उसके लिए एडवाइस देते रहे और नाडा की भी जो है एक्टिविटीज़ को वो ओवरसी करता रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोकिंग कोल मिशन। तो ये आपका GS3 का इकोनॉमी के सेक्शन से ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अभी नेशनल स्टील पॉलिसी में हमने कहा था कि हमको स्टील मेकिंग के लिए 300 MTPA जो है वो कोल चाहिए होगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि 170 MT कोल जो है हमको 2030 तक चाहिए होगा। 180 के करीब तो है वो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया कि वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो अपनी कोकिंग कोल प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ताकि कोकिंग कोल के जो है माइंस में से प्रोड्यूस कर सके जल्दी से जल्दी, और कोकिंग कोल ब्लॉक्स के लिए भी और ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है CIL को ताकि वो इसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Geospatial Policy of 2021. So you know that Google in India has launched the Google Street View services in 10 cities initially, and this has been made possible only because India launched the National Geospatial Policy in 2021. So you know that this policy was launched by the Department of Science and Technology last year, and it provides a framework for the Department of Science and Technology so that it can partner with state and central agencies so that they can enable access to and promote the use of geospatial data in India. So basically India wants to promote geospatial entrepreneurship. Startups can be promoted in the field of geospatial sector. So basically the data which is related to geospatial services is being provided in public domain so that the startups or industries associated with this sector can take care of that data and partner with governmental entities and utilize it to innovate and launch new products and services. So what are the salient features of this policy? So it is basically replacing the National Spatial Data Committee with a multidisciplinary expert committee. It will be called as Geospatial Data Promotion and Development Committee, and it will be working with the Survey of India, and both of these GDPDC and Survey of India will act as the hub, and they will collect data from the lead agencies. So lead agencies, the central and state level lead agencies will provide them with geospatial local data, and all that data will be compiled into high resolution national topographic database. So the state and central level partnering agencies will provide this data through data nodes, and in return these state and central level partnering agencies will upload that data, and they will try to would be working towards making a geo platform. Okay, so this geospatial data, metadata and data from the state and central level agencies will be made available to the public or to these industry through a geo platform. So it will be this GDPDC will designate a partnering agency through which this geo platform can be made accessible to the users. So even the National Skill Development Council is working with the industry to provide skills which are relevant for the geospatial sector. So the next topic is data on malnutrition. So this topic is important for your GS1 social issues. So Union Minister for Women and Child Development has confirmed to the Rajya Sabha that Government of India aims to reduce stunting and undernutrition among children under 6 years by 2% per annum. So these are some confirmations given by the government that we want to reduce low birth weight by 2% per annum, anemia by 3% per annum, and the government has also highlighted that Meghalaya has the highest number of stunted children, Maharashtra has the highest number of wasted children, Jharkhand has the highest percentage of women with below normal BMI, that is anemic women. So these are some highlights of the National Family Health Survey of number 5. So institutional births have increased substantially in India to 89%. Stunting has also reduced, wasting has also reduced, underweight prevalence has also reduced. Even women who were suffering with anemia and they had this below normal BMI,
they have also reduced from 22.9% to 18.7% in NFHS 5. So the next topic is Prevention of Money Laundering Act. So this topic is important for your GS2 governance section. So Supreme Court has upheld the constitutional validity of PMLA because a petitioner went to the court saying that the government time and again introduces several amendments to this act. Government introduces certain amendments to this act and passes it through the money bill route. So that's why the petitioner was arguing that it violates the personal liberty, procedures of law and constitutional mandate, and the process of PMLA itself is the punishment. Okay, because you know that it has stringent provisions. So now the Supreme Court has given a judgment that money laundering is a heinous offense. It is not any other crime. It is as heinous as terrorism. So the court has upheld the quantum of punishment which is mentioned in this act, and the Supreme Court has also said that PMLA has been enacted as a result of international commitment given by the government of India. So that's why it is valid. And it has also said that the power of ED to seize and arrest, attach the properties of the accused is also valid. And it has been informed that ED has attached over 1 lakh crore rupees worth of properties of accused till March 31st, 2022. So it has also, the Supreme Court has also upheld that it is not mandatory for ED to provide the ECIR, that is similar to FIR, which is lodged by police. So it is not mandatory for the ED to share a copy of ECIR with the accused if in case ED feels that it is not in the interest to share the ECIR with the accused. Okay, so SC has also upheld the twin conditions which were set for bail in section 45 of the act. So what was there in it, that in 2017 the Supreme Court struck down these two conditions because these two conditions were the minimum requisite conditions in case an accused wanted to get a bail. So Supreme Court struck down it in 2017 and said that of course you cannot deny a bail to an accused, but the parliament revived these two conditions once again because the government of course brought an amendment in 2018, and now the Supreme Court has even upheld these twin conditions again. So it means that the bail under PMLA becomes more stringent as it was before 2017. So it has also upheld the section 224 of PMLA, which says that the burden of proof in falls upon the accused. So it means that if a judge is hearing a PMLA case, the judge must assume that the accused person is guilty until that person disproves this. Okay, so generally we have this dictum that an accused is innocent until proven guilty, but the reverse is true in this PMLA cases. So you know that PMLA was brought in 2002 to curb money laundering in India, and for that ED is working as the implementation agency and investigating agency. So ED was established in 1956 as an enforcement unit, but it was renamed as Enforcement Directorate in 1957, and it now functions under the Department of Revenue, and it implements the provisions, or it enforces the provisions of FEMA and certain provisions, not all provisions, certain provisions of PMLA also. It has been given the power to attach the assets of culprits who are found guilty of violating FEMA. Okay, so the next topic is UN peacekeeping. So this topic is important for your GS2 international relations. So two BSF personnel who were part of the UN peacekeeping mission in the DR Congo region, they have been killed because of certain protests in the region. Anyways, what is important for us to discuss here is what about the UN peacekeepers. So this United Nations peacekeeping was created in 1948, and these are called as blue berets or blue helmets because of course they wear blue helmets. They provide security, political and peace building support to the countries who are under any form of conflict. And who authorizes the UN peacekeeping missions? The UN Security Council. But it is the collective responsibility of all UN member states to contribute to the funding of the UN peacekeeping operations. They were also given the Nobel Peace Prize in 1988, and India's role is prominent in US peacekeeping because we have contributed more personnel to the UN peacekeeping than any other country. India also is the 5th largest troop contributor currently. India has become the first country to deploy an all-women contingent to UN peacekeeping mission in 2007, and a total of 175 Indian peacekeepers have laid down their lives during these missions. And so India has lost more peacekeepers than any other UN member state.
So the next topic is BM Seal 11. So this topic is important for both your GS2 International Relations and for your GS3 Economy section. So Cabinet Committee on Economic Affairs has approved additional investment of about 12,000 crores in Bharat Petroleum Resources Limited, because they want to participate in oil exploration project in Brazil, and they will be participating with Petrobras, that is a Brazil-based company, and this BPRL will get 40% shareholding in this project, and the project is expected to start producing oil from 2026 and 27 period. It will of course help India to diversify its crude oil supply, and it will also help us to increase our foothold in Brazil, apart from strengthening the bilateral ties between the two countries. So the next topic is National Anti-Doping Bill 2021. So this topic is important for your GS2 governance section. So Lok Sabha has passed this bill, National Anti-Doping Bill, and it provides for the constitution of National Anti-Doping Agency, which will be the implementation agency of the provisions of this bill. It will plan, implement, and monitor anti-doping activities in sports, and this legislation prohibits athletes, their support personnel, and other people who are engaged in doping in sports. And if anyone is found violating these anti-doping rules, there could be disqualification, forfeiture of medals, points, and prizes. Even the person or the athlete can be made ineligible to participate in a competition for a prescribed period, and even financial sanctions can be imposed on that athlete. So bill also proposes to establish a national board for anti-doping in sports, so that they can make recommendations to the government regarding the anti-doping regulations and compliance with the international commitments on anti-doping, so that timely update can be made upon these regulations. The board will also oversee the activities of NADA, that is the implementation wing of this bill or this law. So the next topic is coking coal mission. So this topic is important for your GS3 economy section. So as per the national, so this is the information given by Ministry of Steel in the Parliament, that according to National Steel Policy of 2017, if India wants to achieve 300 MTPA of steel making capacity, it would require 170 million tons of coking coal by 2030, and for that the government is making strides. Government through the Coal India Limited is making constant efforts to enhance coking coal production. The CIL is also involved in mass production technology, so that coking coal producing huge mines can enhance the raw coking coal production. CIL is also making steps to offer coking coal blocks, and it will be made to private sector also, so that on a revenue sharing basis, so that maximization of coal production can happen in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time, and please download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.